हेलो दोस्तों, आशीष क्याल हियर एंड दिस इज अ वेरी क्विक वीडियो जिसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा आज एक दूसरे एसेट क्लास की। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नॉट अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि बिटकॉइन के ऊपर अगर आप लोग देखना चाहते हैं वेव पैटर्न इतना एक्यूरेटली काम करता है। And is there a possibility of the bull trend starting in cryptocurrency, which is something like a Bitcoin, is what I'm going to share across, and I'm going to apply and share you the technique which is showing that the third wave is ongoing in this cryptocurrency, and there is the possibility of another wave on the upside to start. So you have to be aware about Bitcoin, you have to be aware about crypto. You need to know that this cryptocurrency can be next major bull trend. So let me very quickly share across my screen. Before I share my screen, I just want to ask you all if these videos are useful for you. If yes, do not forget to subscribe, like, share it across, and put across your comments in the bottom. So I'm going to very quickly share across my research on Bitcoin and how to look at this. This is Bitcoin USD, and I'm going to be sharing across. I use the platform of Delta Exchange where I'll just share that also with you. जहां पर मैं जाके बहुत सारी चीजें करता हूं या ट्रेड करता हूं, चार्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चार्ट है वो हिस्टोरिकली बहुत पुराना नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाके आपको वो चार्ट बता रहा हूँ। So let me go on the Bitcoin chart, which I have kept ready for you all. This is Bitcoin logarithmic chart right from 2012, 2011-12 से, बल्कि 2011 से ये चार्ट रेडी है। और ये देखिए दोस्तों, बिटकॉइन की प्राइस तभी थी $3, अभी चल रही 87,798 वहां पर है ये बिटकॉइन। और यहां पर अगर देखेंगे पूरा पूरा जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव है। इफ यू गो एंड चेक निफ्टी का चार्ट फ्रॉम 1979 ऑनवर्ड, सेंसेक्स का है, निफ्टी अवेलेबल 1991 के बाद से है। इफ यू गो एंड चेक सेंसेक्स का चार्ट 1979 ऑनवर्ड्स, you will find the movement very similar to this specific crypto also, where we had a huge move in the first decade and then consolidation of pura ka pura. So if you look at Bitcoin, it is a very classic chart that you are seeing. I think the cryptocurrency is it's in its fifth primary नहीं साइकिल डिग्री में, ये साइकिल डिग्री है। सो वी हैव दी वन, टू, थर्ड, फोर्थ डन एंड द फिफ्थ इज ऑन गोइंग। फिफ्थ के अंदर वी आर करेंटली इन द थर्ड वेव which usually is the largest, extended, and this is right now getting subdivided. This is getting subdivided. There is a possibility कि because it's a cryptocurrency, जो लॉन्गेस्ट लेग होगा शायद मुझे लगता है एक्सटेंशन फिफ्थ वेव में होगा। दैट इज द पॉसिबिलिटी। बट इफ दैट हैपेंस, द चैलेंज दैट विल कम इज द थर्ड वेव कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट ऑफ द एंटायर फाइव वेव राइज। सो इसलिए मैंने लिमिट किया है कि बिटकॉइन का जो राइज है वो $320,000 के नीचे होना चाहिए। $320,000 is still too far away if you look at it where it is right now. अभी तो दिल्ली दूर है। So right now we might be in the third wave which is ongoing. There is a possibility that we can also form an ending diagonal pattern here. एंडिंग डायगोनल पैटर्न, बट एनी विच वेज अगर ये एंडिंग डायगोनल भी बनता है तो यहां से एक बहुत बड़ा मूव ऊपर में आना बाकी है विद इन द थर्ड वेव। दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम चार्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एंड यहां से वी माइट बी right now subdividing, and this is also a classic inverted pattern, a rounding bottom kind of a pattern। breakout हो गया, रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया, एंड नाउ वी आर गेटिंग रेडी टू मूव ऑन द अपसाइड। सो आई थिंक द नेक्स्ट बुल मार्केट इज कुकिंग अप इन क्रिप्टो करेंसी, एंड दैट इज लुकिंग ऑन द बिटकॉइन। सो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे आता हूं, आई प्लॉटेड सर्टन टाइम साइकिल्स हियर which is a 58 days time cycle. I think the next movement is around 9th of April,
जहां से यहां पर मोमेंटम गैदर होना चाहिए बेसिस ऑफ दिस साइकिल, बट प्राइस एक्शन एंड टाइम दोनों को कंबाइन करना होगा. दैट्स व्हाट द डेली टाइम फ्रेम इज सजेस्टिंग. इफ आई एम लुकिंग एट द डेली टाइम फ्रेम over here, what you can clearly see that this was the completion of one. We had the wave 2 on the downside, and this is ongoing wave 3, which is extending. Within this third wave, we might be, if it's a normal impulse, not an ending diagonal impulse, we might be, this can be wave fourth, which is there, and we might start the fifth. तो थर्ड का फिफ्थ है, मतलब बहुत मूव बाकी है. एंड द मूव कैन स्टार्ट फ्रॉम 9th अप्रैल ऑनवर्ड्स. और मे बी उसके पहले कंसोलिडेट हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. सो मतलब बिटकॉइन में हमें अपॉर्चुनिटीज बाय साइड की शुरू करनी चाहिए देखने. नाउ आई गो टू द प्लेटफॉर्म. दिस इज डेल्टा एक्सचेंज. यहां पर आपको अगर लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट में है, आप लिंक पे जाके चेक कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो. ऑन दिस आई एम गोइंग टू गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट. ठीक है. इफ आई गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, एंड इफ यू हैव नॉट वॉच माई पास्ट वीडियोज ऑन क्रिप्टो, प्लीज इंश्योर आप जाके देखिए वहां पर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यू कैन गो टू डेली टाइम फ्रेम. Once you are on the daily time frame chart, you look at the short term movement. So short term movement में definitely एक false breakdown हुआ था यहाँ पे, previous low के नीचे ट्रैप किया एंड मोमेंटम ऊपर बना. इसके बाद प्राइस एक्सेप्टेंस इस रेंज के ऊपर आ रहा है. इफ आई गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, I can very clearly see that the overall movement on this specific crypto is higher high, higher low pattern formation. Overall, KST is showing lack of momentum, but I think we are right now going to break out of this triangle pattern also. So if I am connecting the low of the trend line and channel, and I'm connecting the top here फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां पर एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म में मिल रही है. तो पहला जो मेरा डिस्कशन था दैट वाज लॉन्ग टर्म चार्ट. देन आई showed you on daily chart. Now I am talking about if there is a short term trading opportunity on this cryptocurrency. So I'm going to draw a parallel channel. ये parallel channel बन गया. We can clearly see again a rounding bottom kind of a pattern and a consolidation which is taking place here very clearly. And I think we will have a classic opportunity on the break above this trend line resistance. So yahan par I am going to be looking forward for buying this crypto above the high of 88,503. ये जो हाई है 88,500 है. सो आई थिंक यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. एंड द केएसटी सजेस्टिंग a possible reversal. So purely learning perspective say I'm talking about is that the overall undertone for the crypto is turning back on the upside. And यहाँ पर बहुत सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि I can simply go and break down this into just small quantity also. अगर मुझे buy करना है say limit price में, I can simply select the best bid. I can I don't really have to do 0.03 quantity which is 0.003. मतलब required margin is only 2.9. So I can buy as low as anything. So अगर लॉट में आपको नहीं डालना है, यूएस डॉलर में डालना है, बिटकॉइन डालना है, मुझे 0.03 का बिटकॉइन लेना है, सो आई कैन गो एंड पंच इन एन ऑर्डर एंड आई कैन गेट दैट. तो यहां से बहुत कन्वीनियंट हो जाता है. सो अभी व्यू क्या बन रहा है, लुकिंग एट द प्राइस एक्शन, looking at the pattern and looking at the KST indicator, the view is for a positive breakout, which will happen if and when this level is taken out. But साथ में you will have to ensure that you maintain the some stop loss, which has to be the low which is currently forming. Stop loss लगाना है, breakout की wait करना है, and once the breakout happens, then we need to ensure to ride it until the channel end. तो टारगेट डिराइव करना है. और अगर ये शुरुआत हो गई है थर्ड वेव की तो बहुत जबरदस्त जाएगा. सो इन दिस एंटायर पीरियड ऑफ फ्रॉम नाउ टिल 1 week, I'm going to be looking for buying opportunities and buying opportunities because the time cycle is turning up. The wave pattern is suggesting the bigger wave is starting higher, and the short term chart is giving me a classic signaling
method. So this is how I'm looking at Bitcoin right now. And if you are interested, अगर आपको भी Bitcoin में ट्रेड करना है या देख रहे हो, I would suggest experiment it out. यहाँ पर you can see options and you can see every other day there is an expiry. यहाँ पर you can see the patterns being forming and it is working. So जो भी methods आप apply कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी पे सेम मेथड्स को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि यहाँ तो और ज्यादा एक्यूरेटली काम कर सकता है अगर आप ये पैटर्न्स को देखेंगे. सो आई थॉट आई जस्ट ब्रीफ यू अप अबाउट माय व्यू एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, लिंक है नीचे कमेंट में, यू कैन चेक फ्रॉम देयर. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, simply feel free to put it in the comment. So what do you think about this strategy, about patterns, channels, combining with KST, and then taking a trade once you have a bigger, broader view basis of time cycle and daily order? That's how I trade, that's how I see things. So मैंने just आपके साथ में share किया. So fantastic guys, and if you have more questions, you can experiment with not only Bitcoin, you can even check Ethereum here. वहां पर आप जाके देख सकते हो क्या वहां पर पैटर्न बन रहा है. एंड इफ यू लुक एट इट, इट्स सिंपली ब्यूटीफुल. ये पूरा का पूरा एक ब्रेक था, ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, यहां पर आने के बाद में नेक्स्ट लेवल ब्रेकआउट आया, वही कंसोलिडेट कर रहा है. लुक एट दिस, इट इज अमेजिंग ब्रेकआउट. नीचे रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट साइडवेज है फिलहाल. If it breaks out again above the high, superb opportunity we will get. And KST is just about to again cross. This is on 1 hour time frame chart. This is Ethereum. So I think something is cooking up in the space of Bitcoin, in the space of Ethereum, and this is how I am looking at the entire space. So I thought I'll share across this short video on cryptocurrency. Is the next bull trend cooking up in crypto like Bitcoin and Ethereum? I think the answer is yes, and you should be ready for it. अगर आपको कोई भी कमेंट है तो नीचे डालिए. आज के लिए इतना ही दोस्तों, और साथ ही में हमारा एक शॉर्ट 2 दिन का टाइम साइकिल ट्रेनिंग है 5th-6th April को. इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू मेंशन इट एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन द लिंक गिवन बिलो. Thank you very much for listening me out. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.